Welcome back to my channel, Awesome Learning. And today's topic here is DNA replication, the machinery and enzymes. We have started with the DNA replication in the previous few videos, and I have told you about how DNA has been replication has been considered as a semi-conservative in nature. We had also done the experiment which proves that replication of DNA is semi-conservative in nature. Now children, how does this replication takes place? What is the machinery? That means replication करने के लिए we require some things. We require some machineries and enzymes. So what are those machinery and enzymes? Let's see here. Now here DNA replication starts at a point, and that point from where the replication starts is called origin or ori. So replication DNA children is very long. Understood? It is a very long, sometimes it can be in a few meters. Okay, so replication will not take place for the whole DNA from the starting to the end. It can take place in between for a particular piece. A particular area can be replicated of a particular DNA. So the replication can start anywhere from the point, but that point where the replication starts is called origin or ori. A unit of replication with one origin is called replicon. Okay, unit. Now where the origin has, now here suppose the origin is here. This is the origin and it has started. Now this area, the unit that will get replicated with an origin, है ना, ये एक unit है और इसके पास एक origin है, right? There is a particular unit which will get replicated and that unit has an origin. So that full unit is called replicon. Okay. During replication, the two strands unwind and separate. Now we know that DNA is winded. You see, it has been helically wounded up. है ना? It has been helically wounded up. तो replication करने से पहले first step ये है कि the DNA which is replicated, it has to unwind itself. It has to unwind and it has to separate. Now you see this area is getting replicated. Only this area is getting replicated. So this area has been unwinded and they are separate. Now the two strands are separate. The two strands are now separated. So during replication, the two strands need to unwind and separate. And how will they separate? The hydrogen bonds have to be broken up. We have to break the hydrogen bonds. था ना? दोनों strands आपस में क्यों एक दूसरे के साथ helically जुड़े हुए हैं? Because of hydrogen bonds. है ना? और हमने कहा था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसी की वजह से ये स्टेबल है. डीएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर स्टेबल. बट रेप्लिकेशन के टाइम पे आई नीड टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स of DNA, and to separate these two strands of DNA I have to break the hydrogen bonds. And how will we break the hydrogen bonds? In the presence of enzyme helicase. So how will you break the H bonds? In the presence of enzyme helicase. The helicase enzyme will help you to break down the hydrogen bonds which are formed between the two strands.
unwinding of DNA molecule at a point. When the DNA molecule is unwind, it at a point it forms a Y-shaped structure. It will form a Y-shaped structure and we call that as replication fork. Now you see these are the two strands of DNA. And here was the origin of replication. So the two strands here have been separated. And how have they been separated? By the help of helicase enzyme. They first got unwounded up and then the hydrogen bonds were broken and they got separated. Okay, and a Y-shaped structure, you can see a Y-shaped structure has been formed. Y-shaped structure has been formed. Okay. Now, the separated strands act as templates. अब जो ये strands separate हुए ना बेटा, ये strand और ये strand, now they will behave as a template. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया जब मैं आपको सेमी कंजर्वेटिव नेचर बता रही थी कि एक पुराना और एक नया, तो दिस वन इज द पुराना वाला, ये होगा पेरेंटल और इसी के सामने एक नया स्ट्रैंड बनेगा. ऐसे ही यहाँ पुराने वाला है और इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बनेगा. So these two strands, the old strands or the parental strands are the templates. They will behave as a template for the synthesis of new strands. Okay. DNA always replicates. Now remember this, very, very, very important. DNA replicates in 5' direction to 3' direction. That means the replication will always be in from 5' to 3'. You see, this is 5'. The replication is from 5' to 3'. Here also in the other strand, the replication is from 5' to 3'. Okay, so remember this replication always takes place from 5' to 3'. Now deoxyribonucleosides, children, याद है ना आपको what is a nucleoside and what is a nucleotide? याद है? जब sugar and nitrogenous base का combination है, सिर्फ phosphate group नहीं है उसमें, then it is a nucleoside. But जब उसमें phosphate group भी जुड़ जाता है, then it is called a nucleotide. याद है ना? So we are talking here about nucleoside. So the deoxyribonucleoside triphosphates, जितने भी हमारे deoxyribonucleosides थे, वो कौन है? Adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytidine triphosphate and thymidine triphosphate. सबके आगे deoxy लगा है क्योंकि these are all DNA. I am not talking about RNA here. D लगा है because of deoxy. है ना? RNA होता तो ये D ना लगता और यहाँ thymidine ना होता, uridine होता. So deoxyribonucleoside triphosphates कितने तरह के? 4 हैं. They will act as a substrate and provide energy for polymerization. Polymerization means polymer बनेगा. Polymer बनेगा तभी तो इतनी लंबी एक और नई chain बनेगी, है ना? है ना? ये this one is the old strand or the parental strand, red वाला, and the blue वाला is the new strand. तो ये new strand या ये जो polymerization है, ये polymer बनेगा तभी तो एक continuous strand की formation होगी. So what are they saying? This line is very important that these ATP, GTP, CTP and TTP, they are the substrates and provide energy for the polymerization process. This is my template strand or the parental strand. Okay, I hope this is clear. And you see they have shown you a colored picture here also. These are the, you see the bonds have been, there are hydrogen bonds. The DNA is helically wound. But here because there was replication fork, this was the origin. यहाँ से replication start हुआ. तो जहाँ से replication start हुआ वहाँ से DNA के strands separate हो गए. देखो
and because DNA के strands separate हो गए, hydrogen bonds टूट गए, तो now they are all alone. See, the nitrogenous bases are here. Now these nitrogenous bases, इन्हीं nitrogenous bases को use करके हम एक new strand की formation करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे. Understood? Now let me show you further how the process takes place. इतना तो समझ आ गया बेटा कि फिर से कि DNA जो है रेप्लिकेशन होती है तो उसके लिए एक ओरिजिन चाहिए. ओरिजिन वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी एंड ओरिजिन से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. हेलिकेस एंजाइम का यूज होता है उनको अनवाइंड करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए और दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए. एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक. एक और नई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने ये पढ़ी कि रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 5' to 3' एंड. ये भी हमने सीखा. और we have also seen that the deoxyribonucleoside triphosphates will act as the substrate and also provide energy for replication. इतना हमने देखा. Now let me show you one thing. Firstly, a small RNA primer is synthesized in the presence of enzyme primase. बेटा एक बात याद रखो, कभी आपने घर में पेंट करवाया हो फर्नीचर को तो हमेशा हम बोलते हैं अपने जो कारपेंटर है कि पहले प्राइमर लगाओ उसके बाद पेंट करो. तो प्राइमर इज जस्ट लाइक एन यू कैन से इनोक्यूलम. जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा सा खट्टा मम्मी डाल देती है दूध में और फिर वहां पर दही जम जाता है. सिमिलरली यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हमें एक छोटा सा स्टार्टअप चाहिए और वो स्टार्टअप पता है हमें कौन दे रहा है? आरएनए प्राइमर. वो स्टार्टअप हमें कौन दे रहा है? आरएनए प्राइमर. एक छोटा सा प्राइमर है और वो कौन सिंथेसाइज करता है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्राइमेस. RNA primer is synthesized in the presence of enzyme primase. अब ये जो प्राइमर है, okay, let me show you. This is your primer, you see. ये, these are your primers. This is your primer. Okay, so they have shown you 3 primers. You see, primers, right? एंड ये प्राइमेस एंजाइम है. तो प्राइमेस एंजाइम की हेल्प से आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज हो रहा है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. वेरी इंपॉर्टेंट. एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंड इट इज डीएनए डिपेंडेंट. That means this enzyme, इस एंजाइम को बनाने के लिए डीएनए की ही जरूरत है. सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में many nucleotides join with one another to primer strands and form a polynucleotide chain or a new chain. You see children, प्राइमर दे दिया है और हर थोड़ी दूरी पर ये प्राइमर सेटअप है. ठीक है, हर थोड़ी सी दूरी पर ये प्राइमर का सेटअप है. एंड होता क्या है, प्राइमर को बैठे हुए देख लिया है और जहां प्राइमर सिचुएटेड है, जहां पे भी प्राइमर अटैच्ड है, ठीक उसी के साथ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो कि न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा. एंड all this takes place in the presence of an enzyme which is DNA dependent DNA polymerase.
Okay, DNA dependent DNA polymerase. So again children, again I am telling you one thing. A small RNA primer in presence of primase enzyme is attached. Now from that primer, उसी primer से many nucleotides will join in presence of DNA polymerase, which is DNA dependent DNA polymerase, and they will form a strand, and that strand will be your new strand which has been replicated. Okay, and children, replication will be as such कि old strand में, suppose old strand में यहाँ पर TAG है, तो उसके सामने T के सामने क्या होगा, A, G के सामने C, T के सामने again A. तो whatever nucleotides are present here in the old strand, उसी के complementary nucleotides जो हैं वो इस primer के साथ join करके पूरी की पूरी एक new strand की formation कर देंगे. तो हो गया ना semi conservative. देखो ये dark blue was the old strand and this light blue is the new strand. ठीक है, and 5' to 3' direction I told you. Now let me show you further. During replication, one strand is formed as a continuous stretch. आप ये देख रहे हो, one strand, this 5' to 3' is continuous, and this is called leading strand. But here the strand is not continuous, it is discontinuous, and this is called lagging strand. The one which is from 5' to 3', from 5' to 3', मैं 5' 3' जो replication होकर new strand बना है उसकी बात कर रही हूँ. From 5' to 3', new 5' to 3'. पेरेंटल में तो ये पेरेंटल में it is from here 5' to 3', but the new strand is from this side, just the opposite, 5' to 3'. So this is continuous, and the continuous one is known as leading strand. But the other strand is lagging strand because it is discontinuous, it is broken. The other strand is formed of small fragments, and children, these fragments are called Okazaki fragments after the name of the scientist who discovered it, and they are discontinuous. Clear? They are discontinuous. Children, the Okazaki fragments are then joined. They will not remain like this, broken. They are joined together to form a new strand. And who will do this joining? There is an enzyme called DNA ligase which behaves as a gum, and it will join these broken fragments to form a new strand which will be called as lagging strand. So the Okazaki fragments are joined together by enzyme called DNA ligase. If a wrong base is introduced in the new strand, suppose a wrong base is introduced in a new strand, DNA polymerase can do the proofreading also. Like you are asked, beta, before submitting your exams, read your paper, revise your paper, whether you have done any mistake or not. So this DNA polymerase has the ability to do the proofreading. कहीं कोई गलत बेस तो नहीं किसी के साथ जुड़ गया.
That can also be done by DNA polymerase. What is DNA polymerase? It is an enzyme which is DNA dependent. Okay, is it clear, children? Now, E. coli, Escherichia coli, completes the replication within 18 to 20 minutes. I told you earlier also, that is 2000 base pairs per second. 2000 base pairs per second. In eukaryotes, replication of DNA takes place at S phase, that is synthesis phase of the cell cycle. Failure in cell division after DNA replication can result in polyploidy. You have done this now. Replication S phase. If you remember the cell cycle में बच्चों S phase एक ऐसा phase है जब क्रोमोसोम नंबर उसमें 4 गुना है ना, 2n plus 2n. Parental type is 2n. और उसकी जो कॉपी बनी that is also 2n. So 4 गुना ज्यादा S फेज में क्रोमोसोम से. तो S फेज के बाद अगर सेल डिवीजन के टाइम पे सेल डिवीजन ना हो, अगर सेल डिवाइड ही ना हो, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद इफ सेल विल नॉट डिवाइड, तो कौन सा सिचुएशन है? क्या हम उसे डिप्लॉयड बोलेंगे? क्या हम उसे हैप्लॉयड बोलेंगे? हम उसे पॉलीप्लॉयड ही बोलेंगे ना. बहुत सारे व्हेन इट इज मोर देन 3 वी ऑलवेज कॉल इट पॉली, है ना. सो वी विल कॉल इट अ सिचुएशन ऑफ पॉलीप्लॉयडी, राइट. सो दिस इज सी. Now replication, if you remember, bacteria is prokaryote. अगर मैंने आपको बताया कि prokaryote का DNA और some eukaryotes also have a circular DNA, if you remember, plasmid की बात हुई है. तो this is circular DNA. अब देखो circular DNA में अगर replication हो रही है तो origin यहाँ कहीं है, origin तो इतना portion जो है वो replicon बन गया. The DNA, the strands got separated. और स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद देखो न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन, ये जो ग्रीन पोर्शन है, न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन हो गई. रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शन. और ये धीरे धीरे ये खुलेगा, ये इधर से भी खुलता जा रहा है, ये इधर से भी खुलता जा रहा है. रेप्लिकेशन देखो पहले सिर्फ इतना सा पोर्शन खुला और रेप्लिकेशन हुई, बट अब ये दोनों तरफ से, क्योंकि ओरिजिन इधर भी है, ओरिजिन इधर भी है, तो ये दोनों तरफ से अनवाइंड होते जाएंगे और रेप्लिकेशन बनती जाएगी. और ये जो न्यू स्ट्रैंड की लेंथ है ये भी इंक्रीज होती जाएगी. सी, इट इज कंटिन्यूइंग, है ना. रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शन. सो ओल्ड डीएनए एंड न्यू डीएनए, right? So nuclear chromosomes, unzipping DNA, complementary base pairs, simultaneous replications, and the two DNA strands are formed. So I hope this procedure is clear to all of you, and I have spoken about everything here. Any doubts you have, you can ask, that will be cleared.